Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Open your SST reading books. Now we'll start our new lesson, our country. This is the lesson 2 of our unit 1 geography. Mention the date on page number 8. Our country is beautiful. It has a variety of natural features, from 7 of the world's highest mountains in the north to long stretches of beautiful coastline and beaches in the south. In the north, there are high mountains with snowy peaks, glaciers, fresh mountain streams, bubbling waterfalls, and clear icy lakes. There are deep valleys and steep rocky ridges. It is very cold there. हमारी कंट्री बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने इसको बहुत से नेचुरल फीचर्स से नवाजा है, जिनमें हाईएस्ट माउंटेन्स हैं, स्नो की पीस हैं, जो सारा पीक्स हैं जो कि सारा साल जो है वो बर्फ़ से ढकी रहती हैं, ग्लेशियर्स हैं, और जब वो ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट होते हैं, बर्फ़ मेल्ट होती है तो फ्रेश माउंटेन स्ट्रीम्स बनाती है, बबलिंग वाटरफॉल्स बनती हैं, और देयर आर डीप वैलीज एंड स्टीप रॉकी रिजेस इन साउथ एंड इट इज़ वेरी कोल्ड देयर, एंड इन द साउथ देयर इज़ वेरी कोल्ड. Now location and neighbors. Now we are studying about our neighboring countries. Pakistan is in the southern part of the continent of Asia. It has an area of 7,96,095 square kilometer. Its area is 7,96,095 square kilometer. We share borders with Iran in the west, Afghanistan in the northwest, China in the northeast, and India in the east. There are 4 neighboring countries Pakistan has: Iran, Afghanistan, China, and India. To the south of Pakistan in the Arabian Sea. From the southwestern tip of the country to the northeastern tip, Pakistan covers a distance of over 1800 kilometers. साउथ वेस्टर्न टिप से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न टिप तक पाकिस्तान का जो एरिया कवर होता है, जो डिस्टेंस है वो 1800 किलोमीटर्स है. लुक एट अ मैप ऑफ द वर्ल्ड. We see that our country is bigger than some countries but smaller than many others. अब देखें, वर्ल्ड मैप देखें, यहाँ पर पाकिस्तान जो है बहुत से ममालिक से बड़ा है, लेकिन बहुत से दूसरे ममालिक पाकिस्तान से ज़्यादा बड़े हैं. Now come on the page number 9. The population of Pakistan is over 207 million. The population is diverse in terms of their languages, habits, customs, and styles of clothing. We may be different from each other, but we all belong to one country. We are all Pakistanis. पाकिस्तान की आबादी 207 मिलियन है, और यहाँ की आबादी जो है वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलती है, उनकी मुख्तलिफ हैबिट्स हैं, स्टाइलिंग ऑफ क्लोथिंग डिफरेंट है, वो बहुत सी चीज़ों में एक दूसरे से डिफरेंट है, बट एक चीज़ उन सब में कॉमन है, और वो है उनकी कंट्री, और वो सब क्या है? पाकिस्तानीज़ हैं. द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ ग्रोन रैपिडली. दिस इज़ बिकॉज पीपल हैव लार्ज फैमिलीज एंड बिकॉज मोर पीपल लिव लॉन्गर. Every year there are also a number of people who move or migrate from Pakistan to another country or move to Pakistan from somewhere else. हर साल जो है पाकिस्तान की आबादी में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ की फैमिलीज़ जो हैं वो हर साल मुख्तलिफ़ ममालिक में माइग्रेट कर जाती हैं, हिजरत कर जाती हैं. The people of Pakistan follow डिफरेंट फेथ्स. अब पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं उनके मुख्तलिफ अकीदे हैं, बट द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ मुस्लिम, लेकिन ज़्यादातर आबादी मुसलमान है. दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीन पोर्शन ऑफ द पाकिस्तानी फ्लैग. इसीलिए हमारे पाकिस्तानी फ्लैग का जो ग्रीन पोर्शन है वो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है. द माइनॉरिटीज़ इंक्लूडिंग क्रिश्चियंस, हिंदूज, पारसीज एंड सिख्स, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द वाइट पोर्शन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग. और जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो दूसरी कौमें यहाँ पर हमारे साथ रहती हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं, सिख हैं, इसीलिए हमारा जो फ्लैग है उसका जो वाइट पोर्शन है वो इन माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है.